जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 05075 टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस में जर्नी करेंगे। और दोस्तों हम लोग ये जर्नी स्टार्ट करेंगे हरदोई से और इस जर्नी कंटिन्यू करें हम लोग अप टू शाहजहांपुर तक। दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अब आप देखिए त्रिवेणी एक्सप्रेस का अराइवल हरदोई पे। नंबर दीजिए ना अपना। हाँ नहीं तो बस खपड़ी चाट दीजिए। हाँ
पीछे मत कह रहे हैं तो नहीं कहा तो ना देखो अभी आप उसी कर दी तो लगी रहा भाई ये पूरा पैसा देंगे और देखो ये कहाँ पर्ची लगी रहा है वहाँ पैसा पूरा मिलो का तो मार्केट घटा है ना जी ना ना पर वीडियो ना फिर उनको बोलने करना ना जैसी इच्छा है वो अपने कुछ करें तो जो कहा जाए कि तुम्हारे यहाँ तो कुछ है नहीं जब हम लोग कुछ है ना तो घर काटने होती है हमके जब मलका तो अपने तो रखो जो यहाँ तो वही है जो पड़ोसन में लोग दोनों नंबर है ना तुम्हारे इधर को बनना नहीं ना ये हाँ भी नहीं तो दोस्तों अब हम लोग की 05075 त्रिवेणी एक्सप्रेस स्किप करेगी रोजा जंक्शन को। तो दोस्तों रोजा जंक्शन की आपको खासियत बताता हूँ। यहाँ पे है डीजल लोको शेड जो कि है रोजा का। यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं WDG4G WDG6G। यहाँ पे डी लोकोस बनते हैं। और दोस्तों रोजा जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जैली चली जाती है सीतापुर की तरफ और एक लाइन चली जाती है लखनऊ की तरफ जिससे हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन जाती है बरेली की तरफ जिससे हम लोग आगे मूव हो रहे हैं वाया शाहजहाँपुर। दोस्तों अब हम लोग ट्रेन स्किप करेंगे रोजा जंक्शन को। आप देखिए इसका स्किप और बताइए कैसा लगा आपको इसका स्किप। और हाँ दोस्तों, रोजा जंक्शन और उसके साथ साथ डीजल लोको शेड रोजा का मैंने एक डिटेल रिव्यू बनाया है, तो आप इसका वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका वीडियो आपको आई बटन में दिख जाएगा ऊपर, और उसके साथ साथ उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में कवर किया दोनों को।
दोस्तों वीडियो को हम लोग करते हैं कंटिन्यू और आप देखिए इसका स्किप। तो दोस्तों हम लोग अब क्रॉस करेंगे खन्नौत को। तो दोस्तों आप देखिए उसका खन्नौत का क्रॉसिंग कैसा है। तो दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले हैं शाहजहाँपुर। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा और बताइए वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ दोस्तों नए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसी वीडियोस मैं पोस्ट करता रहता हूँ अबाउट रेल वीडियोस और रेल कंटेंट को। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और बस अब देखिए उसके अराइविंग शाहजहाँपुर पे। और मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए अपना। और दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।